Good morning and welcome back to our computer class. Today we are going to do exercise of lesson number 7, that is MS Word 2007. Okay, I told you to type that lesson on the computer and I hope you have done that. So today we are going to do exercise of lesson number 7, that is MS Word 2007. What you have to do? You have to open the book, okay, and the page number is here. On what page number it is there? 67 page number. Okay, which page number you have to open? 67 page number you have to open for your exercise. First, what is there? Fill in the blanks. So you have to write it in neat and clean handwriting. First we will be reading the hints and then we are going to write the answers. So what are the hints? Title, tabs, enter, word processing, application, document 1 and the document. Okay, these are the hints. Now we have to fill it in 6 fill in the blanks. So what is there first? Microsoft Word is a dash software. Now which type of software it is there? Word processing. Write down the correct spelling. Okay, so माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज योर फॉर क्रिएटिंग योर डॉक्यूमेंट. सो इट्स अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. द वर्ड एप्लीकेशन opens a blank document with the temporary name. ओके, द वर्ड एप्लीकेशन जब ओपन होता है तो एक डॉक्यूमेंट को टेम्परेरी नेम मिलता है एंड दैट नेम इज योर डॉक्यूमेंट 1. ओके, इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव द नेम इज योर डॉक्यूमेंट 1. ठीक है, कंप्यूटर गिव्स द डिफॉल्ट नेम, दैट इज योर डॉक्यूमेंट 1. द डैश बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ करंट डॉक्यूमेंट and application. Which bar displays the name of current document and application? Yes, it's a title bar which is on the top of the window. Title bar which displays the name of current document and application. Fourth one, we should not press the dash key at the end of each line. Which key we do not press? That is your enter key. Word automatically shifts to the next line if the line goes to the end. Okay, do not press enter key. Enter key will generate a new paragraph. Okay, MS Word opens up with the two windows on the screen known as dash window and the dash window. Which window is open? That is your application window and the document window. The dash contains related commands together arranged in different groups. Okay, that is your tabs. Tabs contain related commands together arranged in a different groups. So write down this. Which page number is this? 67. Now true and false. So we have to write true or false. The shortcut key to close the word application is Control plus F4. It's a false. Okay, it's your Alt plus F4, not Control plus F4. The title bar contains the buttons for saving the document. Title bar में saving के लिए, document के लिए बटन रहता है वहाँ. True. Yes, quick access toolbar में वहाँ present रहता है तो it's true. The application window helps the user to communicate with MS Word program. The shortcut key to print the document is Control plus P. Yes, Control plus P. P for print, तो Control plus P. सेम ऐसे ही ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस, ओके, न्यू फाइल के लिए कंट्रोल प्लस एन. सो फॉर प्रिंटिंग इट्स कंट्रोल प्लस पी, तो इट्स ट्रू. Quick access toolbar is placed below the title bar
is placed on the title bar. So it's your false. ओके, टाइटल बार पर ही क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट, जहाँ सेव का ऑप्शन रहेगा, अनडू रहेगा, रीडू रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. गीता राइट्स अ स्टोरी इन MS वर्ड प्रोसेसर. शी वांट्स टू सी द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन. विच पार्ट ऑफ विंडो डिस्प्लेज इट. कहाँ उसका नाम दिखने वाला है, दे आर आस्किंग यू. तो दैट इज योर टाइटल बार. The teacher has asked Rahul to save his document without using Office button. Suggest him another way to complete this task. Now teacher has asked what is the shortcut key to save. जल्दी से आप बताएंगे क्या है shortcut key. Yes, Control plus S. Save SAVE की स्पेलिंग होती है, तो Control plus F for save. Multiple choice questions. Dash area is used for typing and editing text. Which area? That is your document area. Dash option is used to create a new blank document. New. How many scroll bars are in MS Word? 2. One is your vertical and one is your horizontal. Okay. The extension of saved file in MS Word 2007 is DOCX. फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल के पीछे, हर फाइल के पीछे वहाँ पर ऑटोमेटिकली .docx लग जाता है टू आइडेंटिफाई दैट दिस फाइल इज मेड इन योर वर्ड. टू क्लोज MS Word एप्लीकेशन, क्लिक ऑन ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट. व्हाट यू हैव टू डू, क्लोज करना है आपको, तो क्या करना है? टू क्लोज द MS Word एप्लीकेशन, click on office button and then exit Word. Okay, so you have to tick also and write down the answers also in the blank area. Okay, now answer the following. This I am going to give you separately on your WhatsApp group. That's all for today. Bye bye.